हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जो लोग साइन इन कर चुके हैं तो लेट्स स्टार्ट विद दिस सेशन। लास्ट क्लास के अंदर मैंने आप लोगों को एक वीडियो सेंड किया था और कहा था कि काइंडली इसको रिव्यू कर लीजिएगा एंड द क्वेश्चंस और द पोर्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट और द क्लास वाज रिलेटिंग टू प्रॉफिट स्टेटमेंट्स. Profit statements can be prepared under the two principles called absorption costing and marginal costing. Last class में हमने जो details discuss की थी that was only relating to marginal costing. आज उसी concept को एक दफा हम revise and recall करेंगे and then we will be moving ahead and discussing about the concepts relating to profit statements prepared under the principle of absorption costing. If you can hear me and view me properly, ठीक है, तो just raise your hands. Everyone, raise your hands. Very good, excellent. Just raise your hands if you can hear me clearly. Waiting for everyone to just raise your hands. Myra, if you can hear me better, please just raise your hand. Shabir, Vincent, Shanze, raise your hands if you can clearly listen to me. आवाज आ रही है तो बेटा हाथ खड़ा कर दें. All right, kids, let's start with the work. Oh, that's right. Sorry. All right, kids, in the last class, we discussed about the concept of profit statement, and we discussed that there are two different modules, methods of preparing a profit statement, and the two different costing methods of preparing a profit statement is under the principle of marginal costing and as well as in the principle of absorption costing. Marginal costing statements, internal managerial statements होते हैं, and marginal means what? Variable. Therefore, marginal costing statements are variable costing statements, and these are prepared by internal management for decision-making purpose. The main difference between the statements prepared in the principle of, all right, the main differences between the statements prepared under the principle of marginal costing as well as under the principle of absorption costing is the difference of inventory valuation. Marginal costing statements are internal managerial statements, and for internal management, fixed cost is irrelevant for decision making. Therefore, it is not absorbed into the product cost. Rather, under the principle of marginal costing, we prepare or we value our inventory on variable cost of production. That means ऐसी cost जो कि production related cost है, but by behavior it is a variable cost. Variable non-production cost inventory valuation का part नहीं होगा, fixed non-production cost inventory valuation का part नहीं होगा, and fixed production cost will also not be a part of inventory valuation whenever we are preparing profit statement under the principle of marginal costing. तो normally usually हम जिस इन्वेंट्री जिस वैल्यू पर अपनी इन्वेंट्री को जिस कॉस्ट पर अपनी इन्वेंट्री को वैल्यू करते हैं अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग, इट इंक्लूड कॉस्ट रिलेटिंग टू डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट production expenses and variable production overheads. In order to calculate the contribution, we use simple calculation, that is sales revenue minus total variable cost. Total variable cost will include both non-production variable cost as well as production related variable cost. Inventory valuation के अंदर से variable cost of production include करते हैं, लेकिन contribution के लिए we deduct from our sales the total variable cost. And once we have the total contribution, we deduct the total fixed cost to arrive at the profit. Last class वाली example को भी हम review करेंगे. Last class के अंदर we just make a simple example कि if a business is selling a product for $50
Each unit requires 3 kgs of raw material costing $4 per kg. तो material component जो है, material component की unit cost is $12. Each single unit require labor time of 45 minutes, which is $8 per hour. Therefore, labor content जो है उसकी per unit cost is $6. Variable production overhead is $2 per unit. That means direct material, direct labor, and variable production overheads are all those costs which are relating to production, and by behavior they are the variable cost. Therefore, the unit cost at which the inventory is going to be valued is $20. Variable sales overheads, fixed production overheads, fixed admin overheads, fixed sales overheads को हम अपनी inventory valuation में include नहीं करेंगे. Why? Because all of these costs are either fixed or are non-production variable cost. उसके बाद हमें बताया गया कि एक बिजनेस का नॉर्मल प्रोडक्शन लेवल 20,000 यूनिट्स है, राइट. 20,000 units is a normal means budgeted or standard production level can normally usually be produced 20,000 units. उसके बाद हमें डिटेल्स दी गई relating to sales, opening inventory and closing inventory. So if we are given with the amount of sales, opening inventory and closing inventory, we can actually calculate the actual production level by, I'm talking about requirement number B, जहां पर हम अपनी कॉस्ट ऑफ सेल्स कैलकुलेशन को मॉडिफाई करके किसी भी अननोन फिगर को कैलकुलेट कर सकते हैं. सपोज अगर मुझे क्लोजिंग इन्वेंट्री कैलकुलेट करनी है तो आई कैन यूज ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस प्रोडक्शन माइनस सेल्स इक्वल्स टू क्लोजिंग इन्वेंट्री. अगर मुझे प्रोडक्शन के यूनिट्स कैलकुलेट करने हैं तो उसके लिए मैं सेल्स प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस ओपनिंग इन्वेंट्री से प्रोडक्शन कैलकुलेट कर सकता हूँ. तो इफ यू लुक एट अवर रिक्वायरमेंट, वी हैड अ सेल्स ऑफ $18,000. हमारी सेल्स कितनी है 18,000 की, ओपनिंग इन्वेंट्री 4,000, क्लोजिंग इन्वेंट्री 7,000. तो हमने सेल्स प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस ओपनिंग इन्वेंट्री से प्रोडक्शन कैलकुलेट कर ली कि द नंबर ऑफ यूनिट्स एक्चुअली प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग दिस टाइम ड्यूरेशन वर 21,000. इन्वेंट्री वैल्यूएशन के लिए हम कॉस्ट यूज करेंगे $20. एक्चुअल प्रोडक्शन लेवल इज 21,000 यूनिट्स. Now, when preparing the profit statement under the principle of marginal costing, we have sold 18,000 units at a selling price of $50. Sales revenue comes to 900,000. Next, sales में से we will be deducting the total variable costs, which include cost of sales calculation. First of all, we have opening inventory of 4,000 units, and each single unit is valued at $20. That makes 80,000. Plus production is 420,000. How come we have calculated 420,000? The total actual production level was 21,000 units, and as per the principle of marginal costing, हर एक single unit को हम $20 पर value कर रहे हैं. Minus closing inventory में we have 7,000 units, and each unit would be valued at $20. तो variable production related cost of sales जो हम calculate कर रहे हैं, it is 360,000. लेकिन कंट्रीब्यूशन के लिए हमें सेल्स में से वेरिएबल सेल्स ओवरहेड्स भी इंक्लूड करना पड़ेगा, व्हिच इज नॉट अ पार्ट ऑफ इन्वेंटरी वैल्यूएशन बट व्हिच इज अ पार्ट ऑफ वेरिएबल कॉस्ट. तो वेरिएबल सेल्स ओवरहेड्स बट 10% ऑफ सेल्स रेवेन्यू, या तो हम 900,000 का 10% ले लें, दैट इज 90,000, या फिर हम सेलिंग प्राइस $50 का पर यूनिट कैलकुलेट करें, व्हिच इज 50 का 10% इज $5, and 5 को हम मल्टीप्लाई कर दें 18,000 units which have been sold, that makes 90,000. तो दोनों केसेस में you get the amount of 90,000. 900,000 minus total variable cost में production related variable cost, and we have non-production variable cost to get the amount of contribution. Contribution में से हमने fixed cost minus की. We have 3 different type of fixed costs. We have fixed production overheads, fixed admin overheads, fixed sales overheads. And once we deduct from our total contribution, total fixed cost, we can calculate the profit as per the principle of marginal costing. 50 ka 10% is 5 per unit. Now, before we actually move towards the concept of absorption costing, I would just like you to know that if you have any questions relating to marginal costing, you can just post these questions on the chat bar. If you have any questions relating to marginal costing, you can post the questions on a chat bar.
No. Guys, do you have any questions relating to profit statement under the principle of marginal costing? Anyone with the questions? No, sir. All right. All right, let's start with the work now. Let's start with the concepts of absorption costing. Moving back to the comparison between marginal and absorption costing. Now, as we discussed in our last class, that absorption costing statements are external reporting statements. Absorption costing statements are full costing statements. Absorption costing statements are prepared for external reporting purpose. And absorption का मतलब होता है full costing. Absorption means total costing. Therefore, whenever we are preparing a profit statement under the principle of absorption costing, जब भी हम अपना profit prepare या profit statement prepare करेंगे under the system of absorption costing, inventory valuation will always be based on total cost of production. I repeat, the total cost of production, and the total cost of production means it will include the same variable cost of production जिसको हमने अपनी marginal costing के statements में include किया है, but over here we will also include the fixed cost of production, right? Therefore, inventory will be valued on total cost of production. But sir, fixed cost को प्रोडक्ट कॉस्ट में एब्जॉर्ब करने के लिए हम फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स रिकवरी रेट कैलकुलेट करते हैं, फिक्स्ड ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन रेट कैलकुलेट करते हैं. It's also called the absorption rate. It's also called the recovery rate. Obviously, we need to add the fixed element into our unit cost. So we need to calculate the overhead absorption rate, the rate at which the fixed costs are to be charged to the product cost. जिस रेट पर हम अपनी फिक्स कॉस्ट को अपनी प्रोडक्ट कॉस्ट में इंक्लूड करते हैं, that particular rate is called the absorption rate, recovery rate. तो फिक्स्ड ओवरहेड रिकवरी रेट या एब्जॉर्प्शन रेट है क्या? What is the meaning of fixed production overhead absorption rate recovery rate? The rate at which the fixed production overheads are charged to the product cost. What is fixed production overhead recovery rate, absorption rate? The rate at which the fixed production overheads, the rate at which the fixed production overheads are charged to the product cost or absorbed to the product cost. The rate at which fixed production overheads are charged or absorbed to the product cost. जिस रेट पर हम अपनी फिक्स कॉस्ट को अपनी प्रोडक्ट कॉस्ट के अंदर एब्जॉर्ब करते हैं, चार्ज करते हैं, अप्लाई करते हैं, रिकवर करते हैं, इंक्लूड करते हैं, that particular value, the value at which fixed cost will be included in the part of inventory valuation, उस particular rate of fixed cost को हम कहते हैं fixed production overhead absorption rate. It is also called fixed production overhead recovery rate. And how do we actually calculate this thing? हम recovery rate कैसे calculate करते हैं? It's fixed production overheads divided by normal or budgeted production level. We will not be spreading our fixed production overheads over the actual production level. हमेशा हम अपनी fixed production overheads को किस पर recover करेंगे, किस पर absorb करेंगे? We will always be absorbing our fixed production overheads on our budgeted or normal production level. कुछ questions के अंदर you are not given with the normal or budgeted production level. अगर किसी क्वेश्चन में आपको नॉर्मल या बजटेड प्रोडक्शन लेवल नहीं दिया हुआ, तो फिर उस क्वेश्चन में एक्चुअल प्रोडक्शन लेवल ही हमारा बजटेड प्रोडक्शन लेवल होगा. लेकिन फिक्स कॉस्ट को हमेशा हम
एब्जॉर्ब या रिकवर किस पर करेंगे? वी विल ऑलवेज बी रिकवरिंग और एब्जॉर्बिंग ओवरहेड्स ऑन द नॉर्मल प्रोडक्शन लेवल, ऑन द बजटेड प्रोडक्शन लेवल। हम कभी भी उसको एक्चुअल प्रोडक्शन लेवल के ऊपर रिकवर नहीं करते। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में आपको नॉर्मल प्रोडक्शन लेवल गिवन नहीं है, इट मीन्स कि जो हमारा एक्चुअल प्रोडक्शन लेवल है वही हमारा नॉर्मल प्रोडक्शन लेवल है। सो ओवर हियर इन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, इसकी प्रेजेंटेशन के अंदर व्हाट आर वी गोइंग टू डू, हमने वहां पर कंट्रीब्यूशन शो किया था, यहाँ पे वी विल बी शोइंग द ग्रॉस प्रॉफिट and how we are going to calculate gross profit. Just like any other normal statement, we calculate gross profit as sales minus cost of sales. Sales minus cost of sales will give you the gross profit. And once we have the gross profit, we are going to convert this gross profit into net profit. कैसे convert करेंगे net profit में? कि sir gross profit में से we are going to deduct all the non-production expenses. Gross profit minus non-production expenses or cost equals to net profit. Non-production cost में कौन कौन सी cost आएगी? इसमें हमारे पास fixed and variable non-production cost दोनों include होगी. The non-production cost can be fixed as well as variable. And what are the examples of non-production costs? So the examples of non-production costs may include administration, admin, selling, distribution, marketing, advertising. Admin, selling, distribution, administration expenses, selling and distribution expenses, selling and distribution expenses, marketing and advertising. All of these expenses are what the non-production cost. Irrespective कि ये cost fixed है या फिर variable है, they will be included as a part of inventory valuation. Sorry, they will be included as a part of expenses, not as a part of inventory valuation, but for deducting from the gross profit. तो एक दफा दोबारा से recall कर लेते हैं guys. Whenever we are preparing a profit statement under the principle of absorption costing, first of all, the main important concept is that under absorption costing, inventory is always valued at total cost of production. And when we say total cost of production, it includes cost relating to variable production cost as well as fixed production cost. In order to include fixed production costs into our inventory valuation, we calculate the rate at which the cost is charged to the product cost. And that particular rate of fixed production overhead is called the fixed production overhead absorption rate, fixed production overhead recovery rate. और वो recovery rate हम कैसे calculate करते हैं? Fixed production overhead divided by normal or budgeted production level. अगर किसी क्वेश्चन में आपको बजटेड प्रोडक्शन लेवल नहीं दिया हुआ तो जो एक्चुअल प्रोडक्शन लेवल है वही हमारा बजटेड प्रोडक्शन लेवल होगा. Now, to calculate the profit, we need to first of all calculate the gross profit. And how do we calculate gross profit? It's revenue minus cost of sales that will give us the gross profit. And gross profit को फिर हम convert कर देंगे net profit में by deducting all the non-production cost. I repeat, all the non-production costs, which may include variable production cost as well as non-product and fixed production, fixed non-production cost, which may include selling, admin, distribution, marketing, and advertising. Now, absorption costing seems normal, लेकिन absorption costing के अंदर एक additional treatment करना होता है. And that additional treatment is relating to over or under absorption of overheads. तो पहले हम लोग एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करेंगे कि किस तरीके से फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स में ओवर एंड अंडर एब्जॉर्प्शन अराइज होती है. New page, yes. Now, over and under absorption of fixed production overheads.
of fixed production overheads. Now, सर फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स की ओवर या अंडर एब्जॉर्प्शन कैसे अराइज होती है एंड व्हाट डज ओवर एंड अंडर एब्जॉर्प्शन एक्चुअली मींस, इसका मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल गाइस, किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स हैं सपोज 50,000. एज एन एग्जांपल मैं आपसे कहता हूं कि a business organization have fixed production overheads of $50,000. The business budgeted production level, BPL, which means budgeted production level, and certain time it is also called NPL, that is normal production level. So the normal production level is 10,000 units. एक business organization की fixed production overhead cost 50,000 है and normally generally budgeted back activity level हमारा 10,000 units है. अगर इस सिचुएशन में हम ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट कैलकुलेट करें, ओवरहेड रिकवरी रेट कैलकुलेट करें, तो हम ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, रिकवरी रेट कैलकुलेट कर सकते हैं फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय बजटेड प्रोडक्शन लेवल ऑफ 10,000 यूनिट्स. तो our overhead absorption rate is $5 per unit. That means this is the rate at which we are going to include our fixed cost into the product cost. इस पर्टिकुलर रेट पर हम अपनी फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट को अपनी इन्वेंट्री वैल्यूएशन के अंदर इंक्लूड करेंगे. जो भी आउटपुट प्रोड्यूस होगा हर आउटपुट के ऊपर वी नीड टू ऐड $5 की फिक्स कॉस्ट, राइट? फॉर एग्जांपल ये एस्टैब्लिश हमने कर लिया कि the rate at which the fixed costs are charged to the product cost is $5 per unit. For example, मैंने इस साल या इस अकाउंटिंग पीरियड में जो एक्चुअल प्रोडक्शन की say for example that is only 8,000 units, वेरिएशन आ गया, वॉल्यूम के अंदर चेंजेस टेक प्लेस हो गए कि instead of producing 10,000 units we are only producing 8,000 units. That means हमारा जो एक्चुअल प्रोडक्शन लेवल है, एक्चुअल एक्टिविटी लेवल है, वो कितना है? 8,000 यूनिट्स का है. अब हम पूरे साल प्रोडक्शन करेंगे और हर यूनिट जो प्रोड्यूस हुआ है उस पर कितनी फिक्स कॉस्ट अप्लाई करेंगे, कितनी फिक्स कॉस्ट चार्ज करेंगे? वी आर गोइंग टू अप्लाई $5 की फिक्स कॉस्ट ऑन एवरी सिंगल यूनिट. हम हर यूनिट के ऊपर फिक्स कॉस्ट चार्ज करेंगे $5 की. And how many units we have actually produced? We have produced 8,000 units. So if fixed overhead absorption rate, the rate at which the fixed cost is charged on the product is $5, and we have produced 8,000 units. हमने actually 8,000 units produce की और हर unit पर we have applied a fixed cost of $5. तो 5 into 8,000 units, that makes हमने इस साल 40,000 की फिक्स कॉस्ट अपने प्रोडक्ट के अंदर एब्जॉर्ब की है, चार्ज की है, अप्लाई की है. Because how many units we actually produce? हमने actual कितना आउटपुट प्रोड्यूस किया? सर हमने 8,000 यूनिट्स प्रोड्यूस किए. फिक्स कॉस्ट को हमने स्प्रेड आउट कितने यूनिट्स पर किया था? 10,000 यूनिट्स पर स्प्रेड आउट किया था और हमने एक्चुअली 8,000 यूनिट्स इस साल के एंड तक प्रोड्यूस किए. और अगर हर यूनिट प्रोड्यूस होने पे हमने $5 की फिक्स कॉस्ट अपने प्रोडक्ट में चार्ज की, so the total fixed cost which we have applied, charged and recorded in our books of accounts is how much? 40,000. लेकिन अगर हम ऊपर देखें व्हाट इज अवर एक्चुअल फिक्स कॉस्ट, हमारी फिक्स कॉस्ट है कितनी? हमारी सर फिक्स कॉस्ट 50,000 दी हुई है, लेकिन हमने जो एब्जॉर्ब की है वो कितनी है? वो है 40,000. इसका मतलब if the actual fixed cost is 50,000 and absorbed, charged, recorded is only 40,000, which means क्या हमने अपनी फिक्स कॉस्ट को ओवर चार्ज किया हुआ है या फिर अंडर चार्ज किया हुआ है? क्या हम अपनी फिक्स कॉस्ट को ओवर अप्लाई कर चुके हैं या फिर अंडर अप्लाई कर चुके हैं? हमने अपनी फिक्स कॉस्ट को ओवर रिकॉर्ड किया है या फिर हमने अंडर रिकॉर्ड किया है?
सर अगर हमारी एक्चुअल फिक्स कॉस्ट 50,000 थी और हमने जो प्रोडक्ट कॉस्ट में फिक्स कॉस्ट एब्जॉर्ब की है, चार्ज की है, रिकॉर्ड की है, अप्लाई की है, दैट इज ओनली 40,000, which means 10,000 से हमने अपनी कॉस्ट को क्या किया हुआ है, अंडर एब्जॉर्ब किया हुआ है, अंडर चार्ज किया हुआ है, अंडर रिकॉर्ड किया हुआ है. तो सर fixed cost was 50,000, but we only recorded how much? We only applied how much? We only applied 40,000 की fixed cost. This have resulted in $10,000 under absorption. Under absorption. तो हमें अंडर एब्जॉर्प्शन कब अराइज होती है ये तो पता चल गया. और अंडर एब्जॉर्प्शन क्यों अराइज हुई? बिकॉज आपका बजटेड प्रोडक्शन लेवल कितना था? दैट वाज 10,000 यूनिट्स. एंड हमने एक्चुअली कितने यूनिट्स प्रोड्यूस किए? हमने एक्चुअली 8,000 यूनिट्स प्रोड्यूस किए. तो अंडर एब्जॉर्प्शन विल ऑलवेज अराइज when your actual production level is less than your budgeted production level. तो अगर हम अंडर एब्जॉर्प्शन का एक रीजन बनाएं तो अंडर एब्जॉर्प्शन क्यों अराइज होती है? अभी ओवर एब्जॉर्प्शन का भी मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, लेकिन बिफोर दैट वी कैन एक्चुअली स्टार्ट विद अंडर एब्जॉर्प्शन. कि हाउ डज अंडर एब्जॉर्प्शन अराइजेस? अंडर एब्जॉर्प्शन अराइज क्यों हुई? इस केस में क्यों अराइज हुई है? व्हाट इज द रीजन? सेजल रीजन क्या है बेटा? शब्बीर व्हाट इज द रीजन? द रीजन इज कि हमारा जो बजटेड प्रोडक्शन लेवल था दैट वाज 10,000 यूनिट्स, बट वी ओनली एंड अप प्रोड्यूसिंग लेस देन व्हाट वाज रिक्वायर्ड फ्रॉम अस. हमने 8,000 यूनिट्स एक्चुअली प्रोड्यूस किए, whereas our budgeted normal production level was 10,000 यूनिट्स. दैट मींस हमने 2,000 अंडर प्रोड्यूस किया है, और अंडर प्रोड्यूस करने से हमारे पास अंडर एब्जॉर्प्शन अराइज हुई है. तो व्हेन एक्चुअल प्रोडक्शन लेवल is less than budgeted production level, is less than budgeted production level, fixed production overheads, fixed production overheads are under absorbed, are under absorbed. Are under absorbed. कम एक्टिविटी होगी, इट विल ऑलवेज लीड टू अंडर एब्जॉर्प्शन. फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको क्लास में 4 घंटे पढ़ाया वीकली बेसिस पे, और आपको घर पे जाके कहा कि बेटा घर पे यू हैव टू स्टडी 8 आवर्स, आपको 8 घंटे घर पे पढ़ना है. लेकिन आप में से कुछ कामचोर लोग हैं जो 8 घंटे नहीं पढ़ रहे, वो सिर्फ 5 घंटे पढ़ रहे हैं, 3 घंटे पढ़ रहे हैं. इसका मतलब जो उनकी एक्चुअल एक्टिविटी है वो बजटेड एक्टिविटी से क्या है? कम है. जब उनकी एक्चुअल एक्टिविटी बजटेड एक्टिविटी से कम है, इसका मतलब जो कॉन्सेप्ट उनको एब्जॉर्ब करना चाहिए था, सीखना चाहिए था, अप्लाई करना चाहिए था, वो पूरे कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड नहीं कर सके. उनको कंप्लीटली सारी चीजें क्लियर नहीं हुई. अगर मैं आपसे पूछूंगा बेटा जो कॉन्सेप्ट पढ़ाया था वो एब्जॉर्ब हो गया, तो आप कहोगे नो सर, कुछ कुछ चीजें जो समझ में नहीं आई. एंड व्हाट इज द रीजन? कि योर एक्टिविटी, आपकी जो एक्टिविटी है वो बजटेड एक्टिविटी से क्या है? कम है. So whenever we are producing any output level below the budgeted production level, it will always lead to what? Under absorption of overheads. It will always lead to what? Under absorption of overheads. जो कि हमने ऊपर देखा भी कि हमारा बजटेड प्रोडक्शन लेवल 10,000 यूनिट्स था, लेकिन एक्चुअली हमने कितने यूनिट्स प्रोड्यूस किए? 8,000 यूनिट्स. फॉर एग्जाम्पल, मैं इसी एग्जाम्पल को थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ. मैं कहता हूँ कि मेरे फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स वही 50,000, उनमें कोई चेंज नहीं है. बजटेड प्रोडक्शन लेवल इज आल्सो 10,000 यूनिट्स, राइट? अगर मेरा बजटेड प्रोडक्शन लेवल 10,000 यूनिट्स है, फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स आर 50,000, तो व्हाट इज माय ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट? माय ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट इज $5 पर यूनिट. लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि एक्चुअल प्रोडक्शन लेवल 8,000 यूनिट्स नहीं है. नाउ आई एम प्रोड्यूसिंग एक्चुअली, say for example 12,000 यूनिट्स. दैट मीन्स नॉर्मल से, बजट से मैं ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा हूं. आई एम ओवर प्रोड्यूसिंग. अगर मैं ओवर प्रोड्यूस कर रहा हूं तो सर हर एक सिंगल यूनिट पे मुझे कितनी फिक्स कॉस्ट चार्ज करनी है, अप्लाई करनी है?
I have to record $5 की fixed cost on every single units. So if अगर I am producing 12,000 units, multiply by overhead absorption rate, that is $5 per unit. So 12,000 into $5. How much overheads we have absorbed? हमने charge कितने किए हैं? Sir, हमने 60,000 की fixed cost charge की है, absorb की है, right? अगर हम यहाँ पर इसको workout कर दें, right? 50,000 हमारी actual cost थी, हमने कितना absorb किया? Sir, 50,000 was our actual fixed cost. How much we absorb? हमने 12,000 यूनिट्स पर 60,000 की कॉस्ट एब्जॉर्ब की है, चार्ज की है. इसका मतलब हमने 10,000 क्या किया हुआ है? ओवर चार्ज किया हुआ है, ओवर एब्जॉर्ब किया हुआ है, ओवर रिकवर किया हुआ है. एंड द रीजन इज कि जब भी आपका एक्चुअल प्रोडक्शन लेवल नॉर्मल या बजटेड प्रोडक्शन लेवल से ज्यादा होगा, it will always lead to over and under absorption of overheads. When actual production level is higher than budgeted production level, fixed production overheads are over absorbed. 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 Clear है guys? तो दोनों एग्जांपल्स को देख लें. फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स वर 50,000, बजटेड प्रोडक्शन लेवल वाज 10,000, द ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट इज 5. इफ आई एम एक्चुअली प्रोड्यूसिंग 8,000 यूनिट्स, तो हर प्रोडक्ट पे मैं अपनी फिक्स कॉस्ट $5 चार्ज कर रहा हूं. तो ऑन 8,000 यूनिट्स आई अप्लाइड अ फिक्स कॉस्ट ऑफ 40,000. और अगर मेरी फिक्स कॉस्ट 50,000 है, 40,000 मैंने चार्ज किया हुआ, तो इसका मतलब 10,000 अंडर चार्ज है, अंडर रिकॉर्डेड है, अंडर एब्जॉर्ब्ड है. If I'm producing 12,000 units, then 12,000 into 5, I have absorbed 60,000 की fixed cost, and my fixed cost is only 50,000, but मैंने absorb charge record कितना किया हुआ है? 60,000. That means 10,000 हमने over absorb किया हुआ है. तो under absorption का reason क्या है? Whenever the actual activity is less than the budgeted activity, fixed production overheads will always be under absorbed. Whenever the actual activity is more than the budgeted activity, fixed production overheads are always going to be over absorbed. Before we move ahead, I would again move towards the question and answer session and see if you guys have any problem, conceptual problem relating to understanding of over and under absorption. Yes, anyone with the question answers? Any confusion, any problem? Guys, is there any confusion, any problem? Sir, what is OAR? OAR means overhead absorption rate, overhead recovery rate. ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट भी हम कह सकते हैं, ओवरहेड रिकवरी रेट भी कह सकते हैं. मैंने वहां पर मेंशन भी किया हुआ है, इट इज द रेट एट विच ओवरहेड्स आर चार्ज टू द प्रोडक्ट कॉस्ट. जिस रेट पर हम अपने ओवरहेड्स को प्रोडक्ट कॉस्ट में चार्ज करते हैं, अप्लाई करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, रिकवर करते हैं, that particular cost, that particular rate is called the overhead absorption rate, overhead recovery rate. So what is overhead absorption rate? The rate at which the overheads are charged to the product cost is called the overhead absorption rate. Short में उसको हम OAR कहते हैं. And it is also called overhead recovery rate. It's also called ORR, overhead recovery rate. And how do we calculate overhead absorption rate, overhead recovery rate?
It's fixed production overheads divided by budgeted production level or normal production level. Survive, deduct 50,000 from 40,000. Rhyme. हमारी actual fixed cost कितनी थी बेटा? 50,000 was our actual fixed cost, right? But हमने जो fixed cost अपने product में charge की है, record की है, apply की है, that is only 40,000, right? Because how many units we are producing? We are producing 8,000 units. हमने 8,000 units produce किए और हर unit पर कितनी fixed cost charge की है? 8,000 into $5, we have charged or recorded 40,000 की fixed cost. But what is our actual fixed cost? Our actual fixed cost is 50,000. Absorb, record, charge कितना किया है? 40,000. Therefore, 10,000 हमने क्या किया हुआ है? Under absorb किया हुआ है. I repeat, we have applied 10,000 to be under absorbed. Right? Because 40,000 कैसे आया फिगर? Actual production level हमारा कितना है? 8,000 units. और हर यूनिट पे हमने कितनी फिक्स कॉस्ट चार्ज की हुई है? सर $5. तो 8,000 into 5, that makes 40,000. लेकिन फिक्स कॉस्ट एक्चुअली कितनी थी? 50,000. तो अगर एक्चुअली फिक्स कॉस्ट 50,000 थी, 40,000 हमने चार्ज किया हुआ है, that means 10,000 हमने अंडर चार्ज किया है, अंडर रिकॉर्ड किया है, अंडर अप्लाई किया है. Yes, kids, any other confusion, any other problem? Guys, anyone with the question? No. How many participants are here right now? 24. We have 25 kids. So Aram, Pooja, Myra, any confusion, any problem? Abrar, Alian, Ammar, Amna Shaheen, Arisha, Hania. If you guys have any problem, just go through it or just raise your hands. If you raise your hand, I can also give you an access to the mic. No, sir, absorption is clear. All right. Let's move on. Now, sir, we will be moving towards the treatment of over and under absorption. Accounting treatment of over and under absorption के over and under absorption कैसे calculate होता है ये तो हमें पता चल गया. But what is the accounting treatment of over and under absorption? Accounting treatment of over and under absorption. Now guys, over and under absorption arise क्यों हुआ है? It have arise because of change in volume, right? ये कोई हमने जानबूझ के नहीं किया हुआ, इसमें कोई एरर नहीं है. It's only because of the change in volume. हमारी फिक्स्ड कॉस्ट एक जगह अंडर रिकॉर्ड हो गई है. अंडर रिकॉर्ड का मतलब अंडर एब्जॉर्ब हो गई है और एक जगह हमने अपनी फिक्स्ड कॉस्ट को ओवर रिकॉर्ड कर लिया है, ओवर चार्ज कर लिया है. तो अंडर एब्जॉर्प्शन का मतलब, what does under absorption means? Under absorption means under charging of fixed cost. What does under absorption means? Under absorption means undercharging of fixed production overheads. Now, अगर fixed production overheads under absorb हुए हैं, तो इस under absorption का effect क्या आता है? What is the effect of under absorption?
सर अफेक्ट क्या आएगा कि अगर हमने कॉस्ट को अंडर रिकॉर्ड किया है, अंडर चार्ज किया है, तो इवेंचुअली हमारी कॉस्ट ऑफ सेल्स अंडर चार्ज हो जाएगी. द कॉस्ट ऑफ सेल्स वुड बी अंडरस्टेटेड. कॉस्ट ऑफ सेल्स अंडरस्टेट होती है तो ग्रॉस प्रॉफिट ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है? ओवरस्टेट. दिस इज द इफेक्ट ऑफ अंडर एब्जॉर्प्शन, कि हमने कॉस्ट अंडर रिकॉर्ड की, अंडर चार्ज की, अंडर अप्लाई की, जिससे हमारी कॉस्ट ऑफ सेल्स कम हो गई, ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ गया. नाउ हाउ टू एडजस्ट दिस थिंग? एडजस्टमेंट ऑफ अंडर एब्जॉर्प्शन. शॉर्ट में हम U/A लिख रहे हैं. इट मींस व्हाट? अंडर एब्जॉर्प्शन, एडजस्टमेंट ऑफ अंडर एब्जॉर्प्शन. अब ऊपर पहले इफेक्ट को देखो कि हमने कॉस्ट को जब अंडर रिकॉर्ड किया है, अंडर चार्ज किया है, तो उससे ऑटोमेटिकली हमारी कॉस्ट ऑफ सेल्स डिक्रीज हुई है, राइट? अगर हम इफेक्ट को देखें तो इफेक्ट को अगर देखें तो इफेक्ट के अंदर हमारे पास व्हेन वी हैव अंडर चार्ज, अंडर रिकॉर्ड फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स, द कॉस्ट ऑफ सेल्स इज अंडरस्टेटेड एंड द ग्रॉस प्रॉफिट इज ओवरस्टेटेड. नाउ हाउ टू एडजस्ट अंडर एब्जॉर्प्शन? पहला तरीका यह है कि अंडर एब्जॉर्प्शन से हमारी कॉस्ट ऑफ सेल्स डिक्रीज हुई है, तो हम अपनी कॉस्ट ऑफ सेल्स के अंदर इसे एड अप कर देंगे, प्लस एडेड टू कॉस्ट ऑफ सेल्स, राइट? पहला तरीका तो यह है. और ना, और इट्स नॉट एंड, इट्स और. दूसरा तरीका यह है कि हम उसे कॉस्ट ऑफ सेल्स में एडजस्ट ना करें, राइट? द सेकेंड मेथड इज कि हम उसको कॉस्ट ऑफ सेल्स में एडजस्ट ना करें, कॉस्ट ऑफ सेल्स को वही अंडरस्टेट रहने दें, और हमने इस इफेक्ट को ग्रॉस प्रॉफिट तक ट्रांसफर कर दिया. और जब ग्रॉस प्रॉफिट हमारा ओवरस्टेटेड है, तो दूसरा ऑप्शन हमारे पास ये है कि वी कैन डिडक्ट दिस थिंग फ्रॉम अवर ग्रॉस प्रॉफिट. दोनों में से एक ट्रीटमेंट फॉलो करना है. अगर आपको लगता है कि अंडर एब्जॉर्प्शन का इफेक्ट आप कॉस्ट ऑफ सेल्स में ही मॉडिफाई करोगे, तो उसका इफेक्ट हम ग्रॉस प्रॉफिट तक जाने ही नहीं देते. हमारी कॉस्ट ऑफ सेल्स अंडरस्टेट हो गई है, हम अंडर एब्जॉर्प्शन को कॉस्ट ऑफ सेल्स में एड अप कर लेंगे. दूसरा तरीका यह है कि जो सांप के डसने का जहर है वो हम ग्रॉस प्रॉफिट तक ट्रांसफर कर दें. दैट मींस कॉस्ट ऑफ सेल्स हमारी अंडरस्टेट हुई, सॉरी, कॉस्ट ऑफ सेल्स अंडरस्टेट हुई, ग्रॉस प्रॉफिट ओवरस्टेट हुआ. हमने उसे कॉस्ट ऑफ सेल्स में एडजस्ट नहीं किया, हमने उसको ग्रॉस प्रॉफिट में एडजस्ट किया, एंड अंडर एब्जॉर्प्शन इज एडेड टू द प्रॉफिट. ना, दोनों में से आपको एक ट्रीटमेंट फॉलो करना है. either you need to modify your cost of sales ताकि उस अंडर एब्जॉर्प्शन का इफेक्ट ग्रॉस प्रॉफिट तक ट्रांसफर ही ना हो, राइट? दैट मींस ग्रॉस प्रॉफिट तक हमें वो इफेक्ट ट्रांसफर करना ही नहीं है. हमें उसे कहां पर एडजस्ट करना है? हमें उसे अंडर एब्जॉर्प्शन, दैट मींस कॉस्ट ऑफ सेल्स में ही एडजस्ट करना है. हम उसे अपनी कॉस्ट ऑफ सेल्स में से क्या कर लेंगे? ऐड कर देंगे. लेकिन अगर हम उस एडजस्टमेंट को कॉस्ट ऑफ सेल्स में परफॉर्म नहीं करते, तो अंडर एब्जॉर्प्शन का इफेक्ट ग्रॉस प्रॉफिट पे जाएगा, और उससे हमारा ग्रॉस प्रॉफिट क्या होगा? ओवरस्टेट. और जब ग्रॉस प्रॉफिट ओवरस्टेट होगा, आपने कॉस्ट ऑफ सेल्स में इसको एडजस्ट नहीं किया, तो यू कैन डिडक्ट दिस थिंग फ्रॉम योर ग्रॉस प्रॉफिट. नाउ मेरे ख्याल से मेरे लिए ज्यादा अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट ये है कि हम इसका इफेक्ट ग्रॉस प्रॉफिट तक जाने ही नहीं देते. हम उसे कहाँ एडजस्ट करते हैं? कॉस्ट ऑफ सेल्स में एडजस्ट करते हैं. I repeat, we also have to adjust under absorption in cost of sales. We don't have to take this thing to the gross profit. हम इसको cost of sales में adjust कर लेंगे. लेकिन दोनों ट्रीटमेंट बताने का पर्पस ये है कि कभी कभार एग्जामिनर को आप देखोगे कि वो अंडर एब्जॉर्प्शन को कॉस्ट ऑफ सेल्स में एडजस्ट करता है, तो वो कॉस्ट ऑफ सेल्स में ऐड कर रहा होता है, राइट? और कुछ जगहों पे आप देखोगे कि वो अंडर एब्जॉर्प्शन को ग्रॉस प्रॉफिट में एडजस्ट करता है, तो ग्रॉस प्रॉफिट से माइनस कर रहा होता है. अब बच्चा लोग, आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो कि सर आपने तो कहा था कि अंडर एब्जॉर्प्शन को माइनस कर, एड अप करना है, एग्जामिनर उसको माइनस कर रहा है. तो भाई एग्जामिनर उसको कहां से माइनस कर रहा है? ग्रॉस प्रॉफिट से. और हम कहां पर इसको एड अप कर रहे हैं? कॉस्ट ऑफ सेल्स में. तो दोनों ट्रीटमेंट इनवर्सली फॉलो हो रहे हैं. दोनों में से एक ट्रीटमेंट आपको फॉलो करना है. ईदर यू नीड टू फॉलो द अंडर एब्जॉर्प्शन, यू नीड टू एडजस्ट अंडर एब्जॉर्प्शन इन योर कॉस्ट ऑफ सेल्स, या फिर दूसरा तरीका ये है कि हम उसको अपने ग्रॉस प्रॉफिट में एडजस्ट करें. नाउ ओवर एब्जॉर्प्शन. ओवर एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है? ओवर एब्जॉर्प्शन मींस ओवर चार्जिंग ऑफ ओवरहेड्स.
ओवर एब्जॉर्प्शन का मतलब मीन्स कि हमने कॉस्ट को क्या किया हुआ है, हमने कॉस्ट को ओवर चार्ज किया हुआ है, ओवर रिकवर किया हुआ है. Now, over absorption means overcharging of fixed production overheads. जिससे इफेक्ट क्या आया कि सर ओवरचार्जिंग से हमारी कॉस्ट ऑफ सेल्स ओवरस्टेट हो गई. एंड जब कॉस्ट ऑफ सेल्स ओवरस्टेट होती है तो ग्रॉस प्रॉफिट अंडरस्टेट हो जाता है. तो ओवर एब्जॉर्प्शन को हम अपने कॉस्ट ऑफ सेल्स में से माइनस करेंगे. वी विल बी डिडक्टिंग दिस इफेक्ट फ्रॉम कॉस्ट ऑफ सेल्स. Either we need to deduct this thing from our cost of sales or we need to add this thing to our gross profit. क्योंकि सर ओवर एब्जॉर्प्शन से क्या हो रहा होता है, ओवर एब्जॉर्प्शन से हम अपनी कॉस्ट को ओवर रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, ओवर रिकवर कर रहे होते हैं, ओवर एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं. कॉस्ट ऑफ सेल्स इंक्रीज हो जाती है. कॉस्ट ऑफ सेल्स इंक्रीज हो गई तो हम अपनी कॉस्ट ऑफ सेल्स में उसको एडजस्ट करें और कॉस्ट ऑफ सेल्स से माइनस कर दें इन ऑर्डर टू डिक्रीज द कॉस्ट ऑफ सेल्स. If we are not adjusting over absorption in cost of sales, उसका trickle down effect gross profit तक चला जाएगा. And because of higher amount of cost of sales, gross profit is understated. तो once the gross profit is understated, तो दूसरा effect हमारा क्या है कि हम उसको अपने profit में अडॉप्ट कर लें. तो दोनों में से एक ट्रीटमेंट हम फॉलो करेंगे. And the more appropriate treatment is to adjust this thing in our cost of sales rather than adjusting the effect of over and under absorption in gross profit. ग्रॉस प्रॉफिट में हमें ओवर एंड अंडर एब्जॉर्प्शन को एडजस्ट नहीं करना. हमें अपनी ग्रॉस प्रॉफिट के बजाय कॉस्ट ऑफ सेल्स के अंदर एडजस्टमेंट्स करनी है. गॉट इट गाइस? गॉट इट एवरीवन? तो बिफोर वी एक्चुअली मूव टुवर्ड्स आवर एग्जांपल जो हमने लास्ट क्लास में की थी, बिफोर दैट वी विल बी मूविंग टुवर्ड्स द क्वेश्चन आंसर सेशंस. Yes, everyone, any questions? Yes, kids. Sir, how cost of sales? Beta, cost, fixed production, overhead is a part of the cost. अगर मैंने कॉस्ट को ओवरचार्ज किया हुआ है तो उससे मेरी कॉस्ट ऑफ सेल्स ओवरचार्ज होगी. अगर मैंने कॉस्ट को अंडरचार्ज किया हुआ है तो वो मेरी कॉस्ट ऑफ सेल्स को अंडरस्टेट करेगा. ठीक है? How is cost of sales affected, which is aspect of cost of sales? Obviously, fixed production overhead is a part of inventory valuation. हम उसको अपनी इन्वेंट्री में कॉस्ट ऑफ सेल्स में एडजस्ट करेंगे और जब उसको कॉस्ट ऑफ सेल्स में एडजस्ट करेंगे तो हमारी कॉस्ट ऑफ सेल्स या तो ओवर एब्जॉर्ब हो रही होगी या अंडर एब्जॉर्ब हो रही होगी. हमने कॉस्ट ऑफ सेल्स को ओवरस्टेट किया हुआ होगा या फिर अंडरस्टेट किया हुआ होगा. जहां पर ओवर एब्जॉर्प्शन होती है वहां पर कॉस्ट ऑफ सेल्स ओवरस्टेट हो जाती है. जहां अंडर एब्जॉर्प्शन होती है वहां कॉस्ट ऑफ सेल्स अंडर रिकॉर्ड हो जाती है. Sir, how is cost of sales affected in respect of cost of sales? सर, अगर हम ग्रॉस प्रॉफिट तक लेके जाते हैं और फिर दोनों में एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी. नहीं, अगर हम ग्रॉस प्रॉफिट तक लेके जाते हैं तो दोनों में नहीं, फिर हमें सिर्फ ग्रॉस प्रॉफिट में उसको एडजस्ट करना पड़ेगा. क्योंकि आपने उसको कॉस्ट ऑफ सेल्स में मॉडिफाई नहीं किया तो उसका इफेक्ट ग्रॉस प्रॉफिट तक चला गया. ओवर एब्जॉर्प्शन की वजह से कॉस्ट ऑफ सेल्स वाज ओवरस्टेटेड, द ग्रॉस प्रॉफिट इज अंडरस्टेटेड. यू नीड टू एड अप द ओवर एब्जॉर्प्शन इफेक्ट इनटू योर प्रॉफिट, राइट? लेकिन अगर अंडर एब्जॉर्प्शन हुई है तो अंडर एब्जॉर्प्शन की वजह से आपकी जो कॉस्ट ऑफ सेल्स है वो अंडरस्टेट हो गई और जब कॉस्ट ऑफ सेल्स अंडरस्टेट हो गई तो इवेंचुअली आपका ग्रॉस प्रॉफिट ओवरस्टेट हो गया. एंड ग्रॉस प्रॉफिट के ओवरस्टेट होने से हम अंडर एब्जॉर्प्शन के इफेक्ट को ग्रॉस प्रॉफिट में से क्या करेंगे? माइनस करेंगे. दोनों में से ईदर ऑफ वन ऑफ द accounting treatment you have to follow. Either you need to adjust this thing in your cost of sales or either you need to adjust this thing in your gross profit. The more appropriate treatment of over and under absorption is in your cost of sales rather than gross profit. Any other questions, guys? Any other questions, everyone? No, sir. Thank you. All right. Got it. Let's move to the example.
All right, if we move to our last class example, right, और लास्ट क्लास एग्जाम्पल के अंदर इसी एग्जाम्पल के डेटा को अगर हम नई रिक्वायरमेंट्स के अंदर यूज करें, राइट, तो नई रिक्वायरमेंट्स के अंदर आई वुड बी मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट रिक्वायरमेंट, दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू कैलकुलेट द ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट. डेटा कॉपी करके अब नेक्स्ट पेज पे हम इसको लेके जाएंगे, राइट, एंड वी विल बी प्रिपेयरिंग. Yes. Suppose we move to our previous class example. जिस स्टेटमेंट को हमने अंडर द प्रिंसिपल ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग प्रिपेयर किया था, अब उसी जगह पे हम अपने स्टेटमेंट को एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग पर लेके जाएंगे. गाइस, वी नीड टू टेक दिस थिंग टुवर्ड्स एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग. Now, for example, back to the example, if we have suppose the selling price of the product is $50, direct material, each single unit requires 3 kgs of raw material, direct labor 45 minutes, variable production overheads, variable sales overheads, fixed production overheads, fixed administration overheads, and fixed sales overheads. Overhead absorption rate हमेशा production related fixed overheads का हम calculate करते हैं, not non-production overheads. Now अगर मैं आपसे कहता हूँ कि calculate the overhead absorption rate, if my first requirement is to calculate the overhead absorption rate, so what is my overhead absorption rate? My overhead absorption rate is fixed production overheads divided by budgeted production level. It's going to be fixed production overheads divided by budgeted production level. So what are our fixed production overheads? Our fixed production overheads are $100,000. It's $100,000 divided by budgeted production level. And what is our budgeted production level? Budgeted production level or normal production level was 20,000 units. So fixed production overhead absorption rate is what? $5 per unit. Now overhead absorption rate हमने क्यों कैलकुलेट किया है? ताकि हम इसको इस रेट को अपनी इन्वेंटरी वैल्यूएशन में कैलकुलेट या एब्जॉर्ब कर सकें. Now the second requirement is calculate the value of inventory under absorption costing. Calculate the value of inventory under absorption costing. Now, if we calculate our inventory under the principle of absorption costing, तो हम कौन-कौन से elements को अपनी inventory valuation में include करेंगे? We need to add up, we need to include all the production related cost, which will include direct material. And what is direct material cost? It's $12 per unit. 3 into $4, that makes $12 per unit. We will be including direct labor, which is 0.75 into 8, that is $6 per unit. And we need to include variable production overhead, which is $2 per unit. क्या सर वेरिएबल सेल्स ओवरहेड्स को इंक्लूड करेंगे? नो सर, वेरिएबल सेल्स ओवरहेड इन्वेंटरी वैल्यूएशन का पार्ट नहीं है. फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स यस, लेकिन फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स को हम रिकवरी रेट पर, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट पर इंक्लूड करेंगे. एंड व्हाट इज अवर ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट? It's 100,000 divided by the normal production level.
which is $5 per unit, जिसकी working हमने नीचे की हुई है. इसका मतलब under the principle of absorption costing, we need to include all the variable plus fixed production overheads. Fixed admin selling overhead inventory valuation का part नहीं है. तो inventory valuation के अंदर we have direct material, we have direct labor, we have variable production overheads, and we have fixed production overheads, recovery rate, overhead absorption rate. Fixed production overheads bracket में overhead absorption rate. So what was our direct material cost? It was $12. What is our direct labor cost? It's $6. What is our variable production overheads? It's $2. And what is our overhead absorption rate? It's $5. इसका मतलब under the principle of absorption costing, we will be valuing our inventory at price of $25 per unit. Got it, guys? मार्जिनल के अंदर इन्वेंट्री में क्या चीज इंक्लूडेड थी? मटेरियल, लेबर एंड वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड. एब्जॉर्प्शन में मटेरियल, लेबर एंड वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स के साथ साथ वी आल्सो हैव फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स which are $5 per unit. The next requirement is calculate over or under absorption. Calculate over or under absorption of fixed production overheads. Calculate over or under absorption of fixed production overheads. Calculate fixed production, calculate over or under absorption of fixed production overheads. Now, over and under absorption calculate karte hain. First of all, we'll go and see what is our actual production level. हमने actually कितने units produce किए हैं? Sir, हमने actually units produce किए थे. Those were, उनको adjust किया हुआ था, right? कैसे adjust किया हुआ था? Marginal costing के अंदर हमने अपना actual production level calculate किया हुआ है. Yes. This was our actual production level. Yes, this is our actual production level. And what is our actual production level? It's 21,000. So 21,000 अगर हमारा actual production level है, multiply by overhead absorption rate. Actual production multiply by overhead absorption rate equals to overhead absorbed. Overhead charged, absorbed, charged, recorded. So actual production level is 21,000 units. Multiply by overhead absorption rate is $5 per unit. That makes 105,000, right? 21,000 into 5 per unit is $105,000. Now, what was our fixed production overhead? Sir, fixed production overheads तो हमारे 100,000 थे, लेकिन हमने कितने units produce किए? हमने 21,000 units produce किए, तो it has resulted in fixed production overheads being over-absorbed, right? Over and under absorption हम calculate करेंगे. Over and under absorbed equals to actual minus absorbed. कितना है? 100,000 minus absorbed is how much? Absorbed is 105,000. This have resulted in 5,000 to be over absorbed. $5,000 over absorbed.
It's $5,000 over absorbed. Now, this is one way. There is also one alternative way through which we can calculate the over and under absorption. और वो कैसे calculate कर सकते हैं? What is our budgeted production level? What is our budgeted production level? Budgeted production level was 20,000 units, right? What is our actual production level? Actual production level is 21,000 units. So 20,000 units हमारा budgeted production level है. Actual production level is 21,000 units. Therefore, we have overproduction. कितनी overproduction है? So overproduction is 1,000 units. अगर actual production level कम होता तो underproduction हो रही होती. Multiply by overhead absorption rate. And what is our overhead absorption rate? It's $5 per unit. Multiply by overhead absorption rate, which is $5 per unit. So 1,000 into 5, 5,000 is over absorbed. Whenever the actual activity is going to be higher than the budgeted activity, it's always lead to over absorption of overheads. It's always lead to over absorption of overheads. All right, kids. Now we have everything with us. अगर हमारा actual production level 20 से कम होता, it would have lead to under absorption. But since हमारा actual production level ज़्यादा है budgeted से, it have lead to over absorption. Right? So let's start with profit statement under the principle of absorption costing. Profit statement under the principle of absorption costing. All right, kids. So let's start with the profit statement. What is our sales revenue? The sales revenue is how many units were sold during the year. What was our actual sales? It's 18,000 units. It's 18,000 units multiplied by selling price is $50 per unit. The sales revenue is going to be 900,000. 900,000. We are making all the workings in bracket as well. The sales revenue is 18,000 units multiplied by $50. That is 900,000. Less cost of sales. Marginal में variable cost थी यहाँ पर cost of sales. What is our opening inventory? Opening inventory comprises of, I guess, 4,000 units, right? 4,000 units. And as per the principle of absorption costing, each single unit is valued at the total cost of production, which include variable plus fixed. That makes $25. 4,000 into 25. That is 100,000. Plus production. What is our production? Our actual production is, now we are taking actual production because actually हमने 21,000 units produced किए हैं, and each unit is going to be produced at a total cost of $25. That makes 525,000 minus closing inventory. Now closing inventory comprises of how much? 7,000 units, and each unit is valued at $25. So 7,000 into 25 is 175,000.
100 plus 525 minus 175. So cost of sales comes to 450,000. This is called unadjusted cost of sales. What is this? This is unadjusted cost of sales. 450,000. It's unadjusted cost of sales. Why is this unadjusted cost of sales? Because we need to adjust over and under absorption. हमारी actual activity budgeted activity से ज्यादा है, तो this have resulted in over absorption of overheads. हमने अपनी cost को over absorb किया हुआ है, overcharge किया हुआ है. कितने से over absorb किया हुआ है? 5,000 से. तो हम यहाँ पर ओवर एब्जॉर्प्शन को क्या करेंगे? माइनस. अगर अंडर एब्जॉर्प्शन हुई होती तो हम उसे क्या कर लेते? एड अप कर लेते. लेस फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स ओवर एब्जॉर्ब. क्योंकि हम ग्रॉस प्रॉफिट तक उस इफेक्ट को लेके नहीं जाएंगे, हम इसको यहीं पर कॉस्ट ऑफ सेल्स में एडजस्ट करेंगे. तो फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स आर ओवर एब्जॉर्ब, दे वुड बी डिडक्टेड. माइनस 5,000. 450,000 minus 5,000, the actual cost of sales comes to 445,000. 900,000 minus 445, that makes 455,000 is my gross profit. Less non-production cost. Now we are going to include all the non-production cost. And what is our non-production cost? We have variable sales overheads, which was 10% of sales value, या फिर $5 per unit. So 18,000 units multiplied by $5, that is 90,000. So what is our non-production cost? We have variable sales overheads, which is $5 per unit because it was 10% of sales value. Selling price is 50, 50 ka 10% is 5. Multiplied by number of units sold is 18,000. That makes $90,000. $90,000. Yes. It's not 5%, it's 10%. It was $5 per unit, or it was 18,000 units into $5. It's either 900,000 ka 10%, which is 90,000, or it's either 5 into number of units sold. Then we have fixed admin overheads. What is our fixed admin overheads? And then we have fixed sales overheads as well. The fixed admin overheads are 40,000 and fixed sales overheads are 20,000. The total non-production cost is 150,000. 455 minus 150,000 net profit as per absorption costing. Net profit as per absorption costing comes to 305,000. Now you will go and see that profit as per marginal costing is different and profit as per absorption costing is different.
मार्जिनल कॉस्टिंग का जो प्रॉफिट था दैट वाज हाउ मच, हमने मार्जिनल कॉस्टिंग में प्रॉफिट कैलकुलेट किया दैट वाज 290,000 एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का जो प्रॉफिट है दैट इज 305,000. प्रॉफिट आर गोइंग टू बी डिफरेंट, प्रॉफिट दोनों स्टेटमेंट्स में डिफरेंट होंगे, और वो क्यों डिफरेंट होंगे, उनके पीछे रीजंस क्या हैं, that we are going to discuss in tomorrow's class at the same time 9 o'clock, right guys? But before you actually go on, I would like to take an attendance and we'll move towards the question answer session. All right. Sir, time khatam ho gaya. Yes, beta, time khatam ho gaya. We have another class. All right. Sir, how do we know what to add when finding out the inventory? I repeat, मैंने शुरू के अंदर आप लोगों के साथ explain किया था आप लोगों को कि in inventory valuation, if we are preparing profit statement under the principle of marginal costing, inventory is valued at variable cost of production. जो भी cost production related है और variable है, marginal costing की inventory valuation का part होगा. When preparing profit statement under the principle of absorption costing, inventory valuation will be based on total cost of production. Total cost of production. Yes, I will be sharing the video and as well as the slides of all these workings obviously will be shared to you. Please go through the concepts and we'll continue our class tomorrow at the same time. That's 9 o'clock. All right. Take care, everyone. Take care.